So we are discussing about the chemical properties of group 16 elements. Okay, group 16, group 17, and group 18 elements. So we have already discussed about the oxidation state. Oxidation state. Okay, its reactivity towards hydrogen, its reactivity towards oxygen to form respective hydrides and oxides. Okay, so today we'll discuss about the reactivity towards halogen. Okay, these group elements and the reactivity towards halogen compounds. So one by one we will discuss. So first group, consider group 16 elements. Okay, so group 16 elements consist of what? कौन से element है group 16 में? Yes, oxygen, then sulfur, selenium, tellurium, polonium. So when these elements they react, when these react with the halogen compounds, what are the halogen compounds? Halogen compounds in group 17 elements, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. जब ये इनके साथ रिएक्ट होता है, ओके, ग्रुप यानी इन शॉर्ट ग्रुप 16 के जो एलिमेंट से ग्रुप 17 से के एलिमेंट से जब रिएक्ट करते हैं, okay, that is we call it as a reactivity towards the halogens. Okay, so the elements of this group 16 reacts with halogen to give large number of halides. Okay, so what they give? They give large number of halides. Okay, that are known as halides. Okay, when group 16 elements, okay, group 16 elements that are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, जब ये react करते हैं, okay, halogen compounds के साथ, halogen group के साथ, okay, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सबसे पहले हलाइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स जैसे वो फॉर्म करते हैं, सेम वे हियर इट इज फॉर्मिंग द हलाइड्स दे विल फॉर्म, एंड दीज हलाइड्स, ओके, लार्ज नंबर ऑफ हलाइड्स दे विल फॉर्म ऑफ द टाइप, ओके, उनका जो टाइप है वो क्या रहेगा? ई, ओके, EX6, EX6, EX4, okay, EX4, then EX2, okay, EX2, where what will be E? E stands for these group elements, and these E stands for, yes, E is equals to sulfur, selenium, tellurium, okay, and X stands for the this element, okay, halogen group element. X stands for the halogen group elements. Okay, X stands for the halogen group elements. So now we will one by one discuss about the hexahalides. Okay, hexahalide. Hexa means 6. Okay, so how these hexahalides are formed? Hexahalides. Okay, hexahalides. So hexahalides, okay, of sulfur, suppose SF6, okay, hexahalides. So it will have the 6 atoms of the halogen compounds. आप देख सकते हो फ्लोरीन है यहाँ पे halogen compounds. So SF6. So this is very first. Okay, EX6, SF6, then SEF6. Okay, SEF6 and TEF6 and TEF6 आप देख सकते हो यहाँ पे. Okay, these 16 group number elements, sulfur, selenium, tellurium, they are reacting with the fluorine to form hexahalides. Okay, क्या फॉर्म कर रही है? Hexahalides फॉर्म कर रहे हैं. Okay, this is hexa means 6 is for this halogen compound के लिए. Okay, so hexahalides they are formed by direct combination, they form, and they are colorless gases. Okay, क्या property है उनकी? They are colorless. Okay, colorless gases. Okay, ये क्या है? Gases है, gaseous state में है, colorless gases है. Okay, so this is the reactivity towards the halogen. Okay, reactivity towards halogen by respective group number 16, group number 17, and group number 18. Group number 16, it forms the halides. Halides may be of the hexahalides, tetrahalides, okay, tetrahalides, then dihalide, okay, dihalide, and monohalide it will form. And group 17 के साथ जब ये react होता है halogen, so it forms the inter-halogen compound. It forms the inter-halogen compounds that we are going to study further. Okay, and when group 18 के साथ जब ये react होता है, so generally 18 elements जो है group के that are chemically inert है, but this xenon, okay, xenon and
this krypton, they are generally reacting. So xenon जब react करता है तो ये क्या form करता है? Xenon. Okay, it is forming xenon fluoride. It is forming xenon fluoride like this. Okay, xenon fluoride XeF2, XeF4 and XeF6. So they are crystalline nature, solid state में है ये वाले, crystalline nature, and they are colorless. They are colorless. So now we will discuss about the reactivity towards metal. Okay, reactivity towards metal of these group elements. Okay, their reactivity towards metal देखेंगे हम लोग अभी. Okay. Wait. Just wait. Recording हो गया. So now the next we will study about the reactivity. देखते हैं हम लोग. Okay. So their reactivity with metals, reactivity towards metals देखते हैं हम लोग. Their reactivity towards metal. So fifth property, fifth chemical property, reactivity towards metal. So one by one we are discussing their reactivities. So fifth property, that their reactivity towards metal. इस चैप्टर में हमें बस वही पढ़ना है. ओके, रिएक्टिविटी, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ना है. ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, reactivity towards metal, how they are reacting with metals. Okay, how these group 16, 17 and 18 elements, they are reacting with the metals. So one by one we will discuss. Okay, we'll start from the group 16. Okay, group 16 के elements से start करेंगे हम लोग. So group 16 elements, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Okay, how they are reacting with the metals. Okay, so elements of group 16 react with metal to form corresponding compounds. Okay, they will form their corresponding compounds. We cannot say exactly like जैसे हम लोगों ने halides के बारे में बोला, oxides के बारे में बोला, when it was reacting with oxide. Okay, when it was reacting with the hydrogen, so it was forming hydrides. Okay, so in that case, when these group 16 elements they are reacting with metal, we cannot say fixed. Okay, they will form different compound. ये क्या करते हैं? different compound form करते हैं. Okay, so जैसे हम लोग देख सकते हैं. Okay, oxygen when reacts with aluminium, suppose 4 moles of aluminum reacts with 3 moles of oxygen, so it gives rise to, okay, twice Al2O3, Al2. Okay, aluminum oxide मिलता है Al2O3. Copper के साथ जब react करता है sulfur, okay, sulfur is a 16 group element. Okay, oxygen is sulfur 16 group element, so it will form copper. Okay, CuS form करेगा. Likewise, they will form different compound, magnesium, and when the selenium of this group 16 element combines with the magnesium, so it will give rise to MgSe. So this MgSe is called as a magnesium selenide. Okay, it is called as a magnesium selenide बोला जाता है इसको, magnesium selenide. Okay, so magnesium selenide. So in this way, these will form a different compounds. Okay, we cannot exactly say okay which exact compound. Okay, the name of that compound नहीं बोल सकते हम लोग. So they will form a different compounds. Okay, so these are generalized reaction. Okay, now the next, for group 17 elements like halogen compounds. Okay, halogen elements, okay, halogen group elements, when they are reacting with the metals. Okay, so group 17 elements when they react with the, so group 17 are what? Halogens group. Okay, halogen group members when they react with the metals, they instantly give metal halides. Okay, आप देख सकते हैं यहाँ पे, they instantly they will give the metal halides. वो क्या देते हैं हमें? metal halides देते हैं. हमें पता है कि these halogens they react, okay, with the metals, they will give halides. Okay, so we can say they will give halides, and the name
ट्वाइस Na, सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट होता है क्लोरीन Cl2, ओके देखो यहाँ पे क्लोरीन, ओके so this will give rise to twice NaCl, okay twice NaCl, so sodium chloride, okay it is a one kind of a halide. Then मैग्नीशियम, ओके मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा ये विच ब्रोमीन, ओके सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है ये वाले जो सर्कल मैंने किया है, so it will form MgBr2, okay MgBr2, okay so it is also halide, magnesium bromide, okay magnesium bromide, sodium chloride, all these are what, all these are the metal halides, okay these are called as a metal halides. तो यहाँ पे लिखता हूं मैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके सोडियम क्लोराइड, ओके तो क्या देते हैं ये वाले, इट इज गिविंग राइज टू अ मेटल हलाइड व्हेरेवर द metal reacts with the group number 17 elements, it will give a metal halides, okay it will give a metal halides. So ionic characters of these halides decreases in the order, okay so ionic character यहाँ पे लिखता हूं मैं ionic character, their ionic character it is in decreasing order, it is in decreasing order, okay so MF, okay MF M Cl क्लोरीन के साथ जब ये मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, मेटल जब रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, ओके सो वेयर M इज अ मोनोवैलेंट मेटल, ओके सो दिस मोनोवैलेंट मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद दिस, आप देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are group 17 एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्ट करता है, सो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, ओके आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट इज हायर इन केस ऑफ फ्लोराइड में बोल सकते हो हम लोग, ओके सो इट इज हायर इन केस ऑफ दिस फ्लोराइड, ओके जब ये मेटल जो है मोनोवैलेंट मेटल रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ, ओके so it is having higher ionic characteristics. Ionic characteristics will be higher in case of fluorine, less in case of chlorine, less again in case of bromine, less again in case of the iodine, okay so these metal halides having metals in their higher oxidation state are more covalent than the ones, okay for example SnCl4, PbCl4, okay SbCl5 and UF6 are covalent, and so you have to remember their ionic characteristics will be in a decreasing order, okay ionic characteristics is in a decreasing order. So for group 17 elements, now for group 18 elements, okay group 18 elements they do not directly react with the metal, okay for group 18 elements के लिए देखेंगे हम लोग group 18 elements, group 18 elements are noble gases, okay they are inert, they are inert gases, and as they are inert gases they do not directly react with metal, okay so that's why they do not directly react with water, do not directly react with metal, react with metal, ये मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, नोबल गैसेस है ये वाले, ओके इनर्ट गैसेस है, so they do not directly react with metals, okay so they may require some catalyst, they may require different conditions, okay at which they will react. So this is about the properties, okay this is about the properties, chemical properties, okay chemical properties हम लोगों ने जो देखा, okay different chemical properties we have studied, and so क्या क्या chemical properties देखा हम लोगों ने, what are the different chemical properties, oxidation state, बराबर है oxidation state देखा है हम लोगों ने, okay then we have studied about the reactivity, okay this is the very first property, second reactivity with the hydrogen, बराबर है reactivity with the hydrogen देखा हम लोगों ने, second property, third property reactivity with oxygen देखा हम लोगों ने, okay when they react with the oxygen, थर्ड प्रॉपर्टी देखा हम लोगों ने, यस ऑक्सीजन, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा देयर रिएक्टिविटी विद द हैलोजन ग्रुप्स, ओके देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन ग्रुप, फिफ्थ प्रॉपर्टी वी हैव सी देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स metal, when they reactivity towards metal. So these are the different chemical properties of group 16, group 17 and group 18 elements, okay respectively we have seen for oxidation state, for hydrogen के साथ reactivity, their reactivity with hydrogen, reactivity with oxygen, reactivity with the
halogen and their reactivity with the metals. समझ में आया सब लोगों को? Okay, so try to prepare a proper notes which will be helpful for you. Okay, while preparing for examination. Okay, properly short notes बनाओ इसके. Okay. So now we'll move ahead with the next topic. The next topic is about the allotropy. Okay. So you have studied about this. Allotropy means what? Okay. So allotropy means what? When the substance having two or more different forms of that element. Okay. So you have already studied this allotropic nature, or allotropy means what? So we'll write the next topic. Next topic is the allotropy. So सब लोगों को समझ में आया? Chemical properties, different chemical properties we have studied. Okay, so now we will discuss about the allotropy. Yes. Now we will describe about allotropy. Okay, allotropy देखेंगे. So you have already studied. Okay. So what is the meaning of allotropy means what? Okay. So allotropy means what? It is what showing two or more different forms of the element. Okay. Allotrops means what? Two or more different forms of the any element. That is what allotropy. It's allotrops. Okay. So the difference between allotropy and polymorphism. What is the polymorphism? Poly means many. Morphism means what? It is the ability of the solid to exist in more than one form of the crystal structure. Okay, polymorphism. Okay, आप लोगों ने पढ़ा होगा polymorphism. Poly means many, morph means structure. Okay, different structure. Polymorph. Okay, polymorphism. Polymorphism पढ़ा होगा आप लोगों ने. So what is the meaning of allotrops? Okay, allotrop. What is the meaning of allotrops? Two or more substance, two or more different forms of element. Okay, so it is two or more different, two or more different forms of element, different forms of element के different forms है ये वाले, बराबर है ना? Allotrops means what? Two or more different forms of the element. And when we say about the polymorphism, okay, it is what? It is the ability of the solid. Okay, it is the ability of the solid. That is the ability of the solid. Okay, to exist in more than one form of crystal structure, more than one form of crystal structure. Okay, crystal structure. तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है. ओके, दोनों में डिफरेंस है. So allotropy is about the two or more different forms of the element. एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स है ये वाले. ओके, एलिमेंट के क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स से है allotrops. Okay, but when we discuss about polymorphism, poly means many, morphism its structure. That is, morphism is related with its structure. Okay, its structure. So poly means many. That is the ability of the solid that exists in more than one form. More than one form में होता है. That's why poly. Okay, morphism. Okay, it's crystal structure. It is related with the crystal structure. So you must have very clear idea when we are studying about the allotropy. Okay, so right now we are going to study about the allotropy. Okay, we are going to study about the allotropy. Allotropy के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. Okay, so the elements of group 16 exhibit allotropy. Okay, group 16 जो elements है. Okay, so this group 16 elements they exhibit. Okay, they exhibit the allotropy. They show the allotropy nature. Okay, they are having their elements. Okay, their elements are having different forms. Okay, these elements are having different forms of the element. Okay, so they exhibit the allotropy. Oxygen has two allotrops. Okay, oxygen is having two allotrops. आप देख सकते हो, एक O2 है और दूसरा है O3 है.
Okay, O3 is called as ozone. Sulfur exists in a number of allotropic form. Sulfur की अगर बात करें, so it is having number of allotropes. Okay, बहुत यानी उसके number of जो allotropes है. Okay, so sulfur exists in number of allotropic forms. Rhombic, monoclinic, sulfur are important allotropes of sulfur. उसमें कौन से important है? Rhombic and monoclinic. Rhombic and monoclinic. Monoclinic. These are important. Okay, are important allotropes of sulfur. So these two important. There are more allotropes of the sulfur. बहुत ही अलग-अलग different allotropes है sulfur के. बस उनमें से rhombic है और ये monoclinic है. ये दो बहुत ही important है. Okay, these two are very important allotropes. Okay, and both are non-metallic. Okay, okay, and both are non-metallic. Okay, both are non-metals. Non-metallic nature के है ये दोनों भी allotropes. Okay, so these two allotropes of sulfur, these are non-metals. Okay, the next is about the, if we talk about the selenium, because हम लोग group 16 की बात कर रहे हैं यहाँ पे. So group 16 में है ऑक्सीजन है, सल्फर है, नेक्स्ट है सेलेनियम. ओके, सेलेनियम की अगर बात करें, so selenium exists in two allotropic forms. Okay, it exists in two allotropic forms. Okay, that is, one is a non-metallic. Okay, two allotropes, एक है red, एक है red. Okay, two allotropic form, one is a red, that is non-metallic. जो red है वो क्या है? Non-metallic है, which is non-metallic. और जो दूसरा है जो gray है, okay, the another one which is gray. Okay, so that is of metallic nature. That is of metallic nature. So selenium is having two allotropes. One is a red and another is a gray. Okay, so maybe its color. So one is non-metallic, which is of red, and another one is a metallic, which is of gray. Then the another element in the group 16, that is tellurium. बराबर है, tellurium is the another element. So this tellurium exists in two allotropic form. Okay, ये भी two allotropic form में है. One is crystalline, another one is amorphous. Okay, एक है crystalline nature का है, one is having crystalline nature, another is having amorphous nature. Okay, so classified based on the color. ये देखो यहाँ पे color के हिसाब से classify किया हुआ है और इसके जो allotropes है based on the nature of crystalline nature and amorphous nature. Last element is a polonium. Okay, last element is a polonium in group 16 element, and this polonium reveals two allotropic forms. Okay, one is alpha and beta. Okay, one is alpha and another one is the beta. So both are metallic. Okay, both are metallic. Both are metallic. So in this way, these are the group 16 element. They are exhibiting the allotropic nature. Okay, they are exhibiting allotropic nature. Allotropes of oxygen, two allotropes of oxygen. Sulfur is having many allotropes, out of which these two are common, two are important, and these two, monorhombic, monoclinic and rhombic, both are non-metallic in nature. Then the selenium K, as per color red and gray, one is a non-metallic, another one is a metallic, which is of gray. Tellurium, one is a crystalline, one another one is the amorphous. Two allotropes are there. Polonium के भी two allotropes है, one is alpha and another one is a beta. Okay, both are metallic nature, both of metallic nature. So in this way, their classification, or we can say the distribution of their allotropes is done in group 16 elements. Okay. So very important fact. Okay, very important fact about the gray selenium. Very important fact about this gray selenium. बहुत ही important है ये वाला gray selenium. Okay, so which is used in a Xerox machine. जो दिखा है ना, मैंने बोला ये क्लासिफाई किया है उसके ग्रे के हिसाब से, इसका कलर के हिसाब से. Selenium is having two allotropes. One is a red, okay, which is non-metallic. Okay, which is non-metallic, and the gray, which is a metallic. So what is the use of this gray metallic selenium allotrope? So gray selenium allotrope of is a photoconductor. ये क्या है, उसका nature क्या है? It is a photoconductor. Okay, what is that? It is a photoconductor. Photoconductor used in photocells. Okay, which is used in photocells.
किस में यूज होता है ये वाला? फोटो सेल्स में ये यूज होता है। ओके, सो द फोटोकॉपिंग प्रोसेस, ओके, आप लोग जाते हो जेरोक्स करने के लिए, ओके, फोटोकॉपिंग प्रोसेस के लिए। सो व्हाट इज दैट फोटोकॉपिंग प्रोसेस, वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये वाला फोटोकॉपिंग प्रोसेस। ओके ओके, फोटोकॉपिंग प्रोसेस, फोटोकॉपिंग प्रोसेस विच इज डिस्क्राइब्ड इन अवर है, बुक में दिया हुआ है, वो देखेंगे। सो फोटोकॉपिंग प्रोसेस ये कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलेनियम कोटेड रोटेटिंग ड्रम। ओके, क्या रहता है इसमें? इसमें रहता है ये जो सेलेनियम कोटेड, ओके, सेलेनियम कोटेड, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलेनियम कोटेड रोटेटिंग ड्रम। ओके, रोटेटिंग ड्रम डायग्राम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, रोटेटिंग ड्रम रहता है यहाँ पे। ओके, रोटेटिंग ड्रम। सो यू विल ऑब्जर्व हियर, ये सपोज अगर मैं सर्कुलर बोलूं, ओके, सो दिस वन इज अ सर्कुलर ड्रम, आप देख सकते हो ये वाला सपोज सर्कुलर ड्रम है। ओके, विच इज कोटेड विद द, यस, विच इज कोटेड विद द सेलेनियम। ओके, अभी ये जो है इसको कोटिंग क्या रहता है, इसको क्या रहता है ना, इसको आउटर से ये देखो, विच इज लाइक दिस। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सो दिस इज सेलेनियम कोटेड, दिस इज सेलेनियम कोटेड। ओके, सेलेनियम से इसको कोटेड किया हुआ रहता है ये वाला। ओके, कोटेड ड्रम है। ओके, is giving a uniform positive charge. Okay, so is given a uniform positive charge, इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं हम लोग। ओके, पॉजिटिव चार्ज। सो लिख लेते हैं हम लोग एक बार ये वाला। so given a positive charge, step 1, and then exposed to an image. ओके, तो देखो ये वाली इमेज है। ओके, दिस इज सपोज द इमेज, जिसको हमें क्या करना है, जिसका फोटोकॉपी हमें निकालना है यहाँ पे सपोज। ओके, कंसीडर दिस इज द, ओके, ये है फोटो जिसका हमें फोटोकॉपी निकालना है, दिस इज द, ओके, नाउ दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कंसीडर दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसका हमें क्या निकालना है, जेरोक्स निकालना है। तो ये देखो सेलेनियम से कोटेड है। ओके, एंड हियर देयर इज अ वन लाइट सोर्स। ओके, देयर इज अ वन लाइट सोर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, दिस इज वन लाइट सोर्स, दिस इज वन लाइट सोर्स। ओके, कैसा होता है पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, और मैं फिर बाद में बताता हूँ आप लोगों को। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके, प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, हम लोग यहाँ पे पेपर डालेंगे। ओके, प्लेन पेपर इन, दिस इज प्लेन पेपर इन, प्लेन पेपर डालेंगे हम लोग। ये जो पेपर है ये ऐसे जाएगा, बराबर है, ये ऐसे जाएगा। ओके, so this is the movement of the paper, we can say। okay, so this is the paper and this is the photocopy, we can say। और ये हो जाएगी हमारी फोटोकॉपी। ओके, so copy out, so in this way copy will be out। okay, so और यहाँ पे जो है हीट दिया जाता है। ओके, एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को। हीट टू फिक्स द टोनर, हीट दिया जाता है क्योंकि हमें फिक्स करना है टोनर को। ओके, so now it consists of a different step। okay, so it is a selenium coated drum, this is a selenium coated drum है। then it is exposed drum to the image। अभी अभी क्या होता है, इस ड्रम को एक्सपोज किया जाता है। ओके, अभी ये जो ड्रम है ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो ये जो लाइट है, लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स यहाँ पे आएगा और ये कहाँ पे होगा, दैट विल बी फॉल ओवर दिस। ये लाइट सोर्स यहाँ से आएगा, यहाँ पे फॉल होगा, लाइट सोर्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फॉल होगा, लाइट सोर्स यहाँ पे आएगा। ओके, सो इट विल फॉल ओवर, लाइट सोर्स will strike from this light source, light energy will emit from this light source and will fall over this original document से फिर बाद में वो ये सेलेनियम ड्रम के ऊपर, and this exposed drum to the image। okay, and this drum will be exposed at this point, at this location।
okay, with the image, and it develop the image. okay, वो क्या करता है, डेवलप करता है इमेज को. okay, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेवलप. it develop the image. okay, it develop the image. first it is exposed to light, then it develop the image. develop होने के बाद okay, it transfer toner to the paper. okay, अभी क्या होता है, जो इमेज यहाँ पे डेवलप हो गई वो इमेज क्या होती है, इस प्लेन पेपर में, इस प्लेन पेपर में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो इस इमेज में प्रिंट हो जाती है. प्रिंट होने के बाद ओके, बिकॉज दिस इज अ सेलेनियम कोटेड, ओके, दिस इज अ सेलेनियम कोटेड ड्रम है ये वाला. ओके, सेलेनियम कोटेड. अभी ये देखो कौन सा है, ग्रे कलर का है. कौन सा है, ग्रे कलर का है, आपने देखा होगा, बराबर है, ग्रे कलर का है. तो दिस विल गेट कोटेड विद दिस और प्लेन पेपर. प्लेन पेपर जो हम लोग जेरोक्स मशीन में जो डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अभी उसके ऊपर वो डेवलप हो जाएगा, वो इमेज वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. इमेज डेवलप हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस टोनर. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये बाहर आएगा ये इमेज, उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे. हीट करेंगे, हीट टू फिक्स द टोनर. ओके, अभी ये कलर को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं. हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो इंक जो रहेगा, वो जो टोनर रहेगा वो सेट हो जाएगा. and in this way we will get photocopy. we will get the photocopy. okay, this is the complete photocopying process. okay, so selenium coated rotating drum is used here, which will rotate in this way, which will rotate in this way. जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लेन पेपर डालते हैं और यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं और कमांड देते हैं स्टार्ट करके, सो व्हाट विल हैपन, द लाइट, आपने देखा होगा जेरॉक्स मशीन में लाइट होता है, light will emit, light will fall over this original document and then that this will projected over the drum. drum के ऊपर ये project होगा, which will be exposed. okay, which this portion of the drum will be exposed to the light and the image, this image will get developed over the selenium. ये coated drum के ऊपर वो image develop हो जाएगा. okay, और बाद में यहाँ से प्लेन पेपर एक्सेप्ट करेगा. प्लेन पेपर एक्सेप्ट करने के बाद जो डेवलप हुआ इमेज वो उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा बाय द पर्टिकुलर कोटिंग. ओके, कोटिंग है इसका, तो उसका कोटिंग हो जाएगा. अभी इस कोटिंग को, इस टोनर को क्या हो जाएगा, इट विल बी हीटेड. ओके, हीट होने के बाद दिस विल गेट फिक्स्ड. बराबर है. अभी ये जो इंक है उसके ऊपर प्रिंट हो गया प्लेन पेपर के ऊपर, इसको हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पेंट, ये जो टोनर है वो फिक्स हो जाएगा. बराबर है. एंड इन दिस वे we will get a photocopy. okay, this is a general process of photocopy. so this is the application of this allotropes of this selenium. okay, which is of gray color, which is of gray color and it is showing a metallic. okay, metallic drum है ये वाला. so this is the process. टेलेरियम भी देखा हम लोगों ने, पोलोनियम भी देखा. so now allotropes of sulfur. okay, as we have said, the sulfur is showing a different allotropes. ओके, जैसे हम लोगों ने बोला कि सल्फर के बहुत अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, तो हम लोग उसके एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर. समझ में आया सब लोगों को? सो व्हाट इज एलोट्रॉपी? ओके, सो द एलिमेंट्स इज शोइंग अ डिफरेंट एलोट्रॉप्स, अ डिफरेंट वी कैन से डिफरेंट टू और मोर different forms of the element. okay, different forms of the element. so oxygen is showing 2 allotropes, sulfur is showing many allotropes, selenium is showing its 2 allotropes, one is the red and another one is the gray. Tellurium is showing 2 allotropes, one is the crystalline, another one is the amorphous, and this polonium is showing 2 allotropes. so all are showing 2 allotropes except sulfur. in a group 16 element, sulfur is showing more allotropes. so now we'll discuss about the allotropes of the sulfur. तो चलो उसके ही allotropes के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सल्फर के allotropes के बारे में. ओके, so now we'll discuss about the allotropes of the sulfur. now we will discuss about the allotropes of the sulfur. okay, as the sulfur is having different forms of the element, different forms of the allotropes that we will discuss. one by one. so allotropes of sulfur, allotropes, different forms of this element, allotropes of sulfur. so sulfur is having different many allotropes. sulfur exhibits numerous allotropic forms. however the rhombic sulfur, okay, जैसे हम ये अभी हम लोगों ने दिखाया, what is that, the rhombic. okay,
द रोम्बिक द सल्फर के लिए रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक ओके आर कॉमन ओके सो रोम्बिक सल्फर सो विल राइट हियर रोम्बिक सल्फर that is called as अल्फा सल्फर उसको बोला जाता है अल्फा सल्फर ओके एंड मोनोक्लिनिक ओके मोनोक्लिनिक ओके दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा सल्फर तो देखो सब लोग एक बार we know that there are having many allotropes of the sulfur के बहुत सारे allotropes होते हैं ओके तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है कॉमन है वो कौन सा है वो अल्फा है और बीटा सल्फर है अल्फा सल्फर विच इज रोम्बिक सल्फर एंड अनदर वन इज द मोनोक्लिनिक सल्फर ओके मोनोक्लिनिक सल्फर these are the most important allotropes of the sulfur okay so their properties is listed out okay properties listed out है आप लोग देख सकते हो आपके बुक में okay so there you can now discuss yes so color of the rhombic okay चलो हम लोग लिखते हैं डिस्कस करते हैं rhombic okay rhombic and another one is a monoclinic rhombic and monoclinic okay rhombic or monoclinic sulfur okay these are the two most important allotropes of the sulfur and now we will discuss one by one with their color okay first देखेंगे हम लोग उसका color क्या होता है okay so color of the rhombic or alpha sulfur okay that is called as alpha sulfur and this is monoclinic is called as beta sulfur color जो है इसका pale yellow color होता है इसका color जो है that is what it is having pale yellowish color है okay rhombic sulfur का and a bright yellow solid okay it is having a bright yellow color एकदम bright yellow color होता है इसका okay if we talk about the shape okay if we talk about the shape orthorhombic okay so it is orthorhombic it is orthorhombic crystal structure है okay it is having orthorhombic crystal structure it is having needle shaped monoclinic structure needle shaped उसका जो शेप है वो needle shaped monoclinic okay monoclinic structure okay monoclinic structure so this is color this is shape melting point if we talk about the melting point of these allotropes of the sulfur so ये इसका थोड़ा सा कम रहता है रोम्बिक का 385.8 केल्विन एंड इसका ज्यादा रहता है 393 केल्विन so 393 kelvin okay so density if we talk about the density it is more in case of the rhombic okay density ज्यादा रहती है इसकी okay इसकी density है 2.069 okay ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है okay सेंटीमीटर क्यूब में and it is 1.989 that is in terms of centimeter cube में दिया हुआ है okay density how much quantity of matter that is present okay per unit kg per meter cube that is volume okay so centimeter cube है then solubility if we talk about the solubility okay solubility of this allotropes of the sulfur so insoluble in water okay this rhombic sulfur is insoluble in water okay so insoluble in water this is insoluble in water okay ये soluble नहीं है water में okay so this is not soluble in water that is rhombic called as the alpha sulfur okay which is insoluble in water okay that is not soluble in water due to its shape okay its orientation बोल सकते हैं हम लोग okay so the next is insoluble in water and soluble in CS2 but it is soluble in this compound soluble in CS2 इसमें एक soluble होगा okay and here it is soluble in CS2 so this is about the solubility if we talk about the structure okay if we talk about the structure of these okay structure अगर discuss करते हैं हम लोग so structure is having yes 8 molecules having Pickering ring structure okay so it is having the ring structure
So क्या है ये रिंग स्ट्रक्चर वो भी हम लोग देखेंगे. Okay, so S8 molecule having S8 molecules having this Pickering ring structure. So PUCKE Pickering, it is having Pickering ring structure. ये कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग. Okay, बाद में देखेंगे. So it is having this Pickering ring structure and S8 molecule with Pickering ring structure. So here it is also same. It is having S8 molecule. Okay, S8 molecules with Pickering ring structure. About the stability, if we talk about the stability of these allotropes, okay, so stability, so stable below 369. Okay, it is stable below. It is stable below 369 Kelvin. 369 Kelvin के below अगर रहे ये stable रहेगा. Rhombic sulfur. Okay, rhombic sulfur will be stable and transforms to बीटा सल्फर अबाउ दिस टेम्परेचर. यानी 365 केल्विन के ऊपर अगर टेम्परेचर गया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट, ओके, दिस विल कन्वर्ट इनटू बीटा सल्फर. ओके, ये देखो ये मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर इसके बियॉन्ड गया तो, 369 के बियॉन्ड गया तो. ओके, एंड दिस इज स्टेबल अबाउ 369. ओके, दिस इज स्टेबल अबाउ 369 केल्विन. ओके, 369 केल्विन के. इसका मीनिंग है मोनोक्लिनिक कब रहेगा, जब ये इसका जो टेम्परेचर है, ओके, अब 369 केल्विन के ऊपर चला गया तो ये मोनोक्लिनिक हो जाएगा. ओके, एंड इट विल रिमेन मोनोक्लिनिक अबाउ दैट ओनली. अगर इसका टेम्परेचर 369 से नीचे चला गया तो ये रोम्बिक हो जाएगा, अल्फा सल्फर हो जाएगा. ओके, so this is about the stability. Their method of preparation, it is prepared by evaporation of roll sulfur in CS4. Okay, so it is having different method of preparation. And if we talk about the beta sulfur, the rhombic sulfur, when melted in a dish and cooled till crust is formed, two holes are made in the crust and the remaining liquid is poured out to give needle shaped crystals of beta sulfur. Okay, so this beta sulfur is prepared from the rhombic sulfur by the method, by different method. Okay, by first heating and then by cooling. Okay, and so this rhombic sulfur is prepared by evaporation of roll sulfur. Okay, so this is about the general properties. Okay, so several modification of the sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized. Because हम लोगों ने देखा है कि allotropes of the sulfur, they are having many allotropes. They are having many allotropes. So group 16 elements, out of this group 16 elements, only all other elements are having 2 allotropes, but this sulfur is having more allotropes. Okay, this sulfur is having more allotropes. So in S8 molecule, the ring is puckered and has a crown shape. Okay, so जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा this puckering ring structure. So what is that puckering ring structure? That we will see. Okay, उसका ring structure क्या है वो देखेंगे हम लोग. Okay, और यहीं पे फिर एंड कर देंगे लेक्चर. So this S8 molecule ring is puckered and has a crown shape. Okay, S8 molecule is having puckering ring structure. ring structure है उसका. Okay, and it form, okay, puckering ring structure and it forms has a crown shape. Has a crown shape. Okay, crown shape, crown. Okay, so it is having a crown shape. It is having a crown shape. Okay, so the crown which is to be wear. Okay, तो उसके जैसा उसका शेप दिखाई देता है, तो वो देखेंगे हम लोग शेप. In cyclo S6, the ring adopts the chair form. Okay, in cyclo or cyclo S6, cyclo S6,
रिंग एडॉप्ट्स द चेयर फॉर्म. ओके, रिंग क्या करता है? रिंग एडॉप्ट्स चेयर फॉर्म. ओके, तो वो चेयर फॉर्म भी देखेंगे हम लोग बस, और ये भी लेक्चर खत्म कर देंगे. ओके, सो लुक एट दिस. So in S8 molecule, the sulfur is having different allotropes. So this S8 molecule, okay, it is showing a structure, and that structure is called as the crown structure. And at elevated temperature, around 1000 Kelvin, S2 is adopted dominant species which likes O2 in paramagnetic. So we will draw first this structure. So this is sulfur. Okay, then this is another sulfur. This is the another sulfur. Okay, this is the another sulfur. And this is the another sulfur. आप देख सकते हो यहाँ पे. So it is having somewhat sulfur. Okay, now it is having sulfur. It is having sulfur this way. It is, yes. आप देख सकते हो इसको. सो इट इज जस्ट इट, आप इसको देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस एज अ क्राउन. बराबर, क्राउन के जैसे दिखता है. ओके, क्राउन के जैसे दिखता है. एंड द बॉन्ड लेंथ इज 2.04 पिकोमीटर. ओके, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन दिस एसेस. एंड इसमें जो एंगल है, ओके, वो है 107 डिग्रीज का एंगल है. 107 डिग्रीज का एंगल है. ओके, सो दिस इज called as the structure. Okay, this is called as the crown shape structure. Okay, इसका जो shape देखो आपको क्या दिखेगा? yes 8 molecules का 1 2 3 4 5 6 7 8 yes 8 molecules. Okay, allotropes of the sulfur is having a crown shape structure. And cyclo S6, okay, it is having a chair like structure. It is having chair form, chair के जैसे दिखाई देता है. Okay, chair जैसे होती है वैसे. सो इट इज जस्ट लाइक अ चेयर. ओके, आप देख सकते हो ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को. ओके, सो इन दिस वे अ चेयर फॉर्म ऑफ S6. दिस इज अ चेयर फॉर्म ऑफ S6 and this is a crown shape of S8 molecule and this is a chair form of S6 sulfur. 6 atoms are present. समझ में आया सब लोगों को? So in this way the sulfur is showing a different allotropy. Okay, so now in next lecture we'll study about the oxo acid, but today we'll end up our lecture here only. Okay, समझ में आया सब लोगों को जो पढ़ा हम लोगों ने आज?